हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले स्टैंडर्ड 9 का विकास का जो सेकंड टेस्ट का असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले इंग्लिश सब्जेक्ट में सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, इसके पहले भी मैंने ऑलरेडी इंग्लिश के बहुत सारे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिया है। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। पोएम फॉर What are the three things the poet will do when he gets to Innisfree? तो आंसर आएगा द पोएट wants to have 9 rows of beans, a hive for the honeybees, and they live there all alone and peacefully. तो ये तीन चीजों की बात कर रहे थे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस. हाउ डज द पोएट वांट टू लिव इन Innisfree? व्हाई? The poet live alone in Innisfree. कैसा रहना चाहता है? Alone. Why? Because the poet wants to go to Innisfree to enjoy its natural beauty. करेक्ट, वो नेचुरल ब्यूटी का क्या करना चाहते हैं? एंजॉय करना चाहते हैं. डन. नेक्स्ट, पोएम 6. Which uniforms is the poet speaking about? The poet is probably speaking about the uniforms that the soldiers wear at a time of war. The word uniform here could also mean the traditional dress of a country. Next question. How are the people under this uniform same? List three similarities. The poet suggested that all people on the earth are the same, as that uniform are the same. Like a breathe, buried, wake, sleep, hat, love, सब एक जैसा वर्क करते हैं. सो दैट्स वाई द सिमिलरिटीज है इनकी. सो दैट्स वाई सबके ड्रेसेस भी कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं. ओके, द नेक्स्ट पोएम 6 का जो सेकंड है उसमें दिया गया स्टेंजा, उसकी बात करेंगे. व्हेन आर वी टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, हु टेल्स अस टू डू सो? तो समटाइम्स सम सेल्फिश पीपल इंस्टिगेट, मतलब सेल्फिश पीपल होते हैं सिर्फ अपनी इच्छा, मतलब अपनी जो है एक्शंस करने के लिए हार्म टू द अदर्स को, दूसरों को हार्म करते हैं. एंड दे डू इट फॉर इट्स ओन बेनिफिट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस. What does the poet think should be done at such a times? Why? The poet believes that during our times of grief and despair, one should find the solace and strength in the nature beauty and the enduring the power of love and memories. Okay, right? Next poem 7. Can a simple jab of a knife kill a tree? Why not? To know a simple jab of knife cannot kill a tree because it takes a many years for the trees or the grow. बहुत साल लगे थे. आफ्टर गेटिंग अ फीड बाय द सॉइल्स में से उसने सनलाइट, एयर, वाटर सब कुछ एब्जॉर्ब किया है. सॉइल में से एब्जॉर्ब किया, सनलाइट एब्जॉर्ब किया, एयर, वाटर, एंड देन इट राइजेस आउट ऑफ द अर्थ. सो दैट्स वाई वो एक नाइफ से कट नहीं हो सकता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ हैज द ट्रीज ग्रोन टू इट्स द फुल साइज? लिस्ट द वर्ड्स दैट सजेस्टेड दैट इट इज अ लिविंग एंड एक्टिव. तो इट स्लोली grows out of the earth and sprout leaves. The word suggestive of its life and creativities are grown slowly, धीरे धीरे ग्रोथ होता है, consuming the earth के अंदर भी और rising out of it, feeding upon its crust, absorbing the years of sunlight, air, water and sprouting of leaves. Clear for this answer? Okay, then 7 में second stanza था. And then it is done. What is done? How? The poet tried to say after the roots to be pulled out. जैसे वो आउट होते हैं, स्नोचिंग, चॉकिंग एंड ब्रोविंग, हार्डरिंग, ट्विस्टिंग और विथरिंग at the trees will die. Okay, and poet says and then it is done means the finally trees will the
डाई, मतलब ट्री क्या हो गया आपका, डाई हो गया है। What is the message the poet want to give through this poem? The poem on killing a tree by Givi Patel conveys the message that people should not cut down the trees and that human action can harm the environment. Clear? Okay, the next poem, poem 8. What sealed the poet's spirit? तो उसका आंसर आएगा अ स्लम्बर sealed the poet's spirits. Why could she not feel anything? So she cannot feel anything because she is dead. Clear for this answer? Okay, the next. Second stanza उसके अंदर. Why does she have no motion or force? So she has no motion or force, which means she now cannot move. ना वो मूव कर सकती है. She does not see, ना देख सकती है और hear anymore as she had died. Next questions. Where does the poet imagine her to be? Why? The poet thinks that she is now a part of nature. ये एक नेचर का पार्ट है. आफ्टर दैट ही इमेजिन्स हर buried inside the earth के अंदर with other rocks, stones and trees and rolling around the earth in its daily rotation. क्लियर? ओके, दैट्स यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश होता है इंग्लिश का सेक्शन बी का. वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना.